Assalamu alaikum my dear students, welcome back to our YouTube channel and we are back with another exciting video. Today we are going to start the next topic in our chapter number 1, 9th class physics series, which is measuring instruments. So be attentive, take out your books or just look at the screen attentively. You don't have to divert your attention if you want to understand the topic easily and thoroughly. So इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. So if we have anything which we have to measure, तो for that particular thing पहले तो हम लोगों को उसको डिटर्मिन करना पड़ता है कि हमें कौन सी क्वांटिटी है जो उसको मेजर करना है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सिलेक्ट which device या which measuring instrument we are going to use to measure that particular quantity. ठीक हो गया. Measuring instruments are used in the past were not so reliable and accurate as we use today. For example, sundial, water clock, and other time measuring devices used around 1300 were quite crude. This is a fact कि अगर हम past की बात करते हैं तो in past they were not accurate instruments that we use for measuring different things such as time. So similarly अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी हमें ये चीज़ें accurate लगती हैं, बट मे बी आफ्टर 20 ईयर्स जो भी हमारे मेजरिंग डिवाइसेस हैं हमें इसमें भी फ्लॉज नज़र आए. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक्यूरेसी है या इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसीजन है या मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन या मेजरमेंट्स हैं वो इम्प्रूव होते रहते हैं. सो उस टाइम पे बिकॉज देवर नो अदर ऑप्शन, तो उस टाइम पे वही कन्वीनियंट था, वही रिलायबल था. बट नाउ वी हैव लेटेस्ट एंड मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट ways of calculations and measurements. On the other hand, digital clocks and watches used nowadays are highly reliable and accurate. Here we shall describe some measuring instruments used in physics laboratory. So in physics laboratory you would be very familiar with this meter rule. This meter rule, what basically it is, a meter rule is a length measuring instrument as shown in figure 1.3. It is commonly used in the laboratories to measure length of an object or distance between 2 points. It is 1 meter long, which is equal to 100 centimeter. Each centimeter is divided into 10 small divisions called the millimeters. Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and it is called as its least count. So least count क्या होती है? Least count is the smallest reading that can be measured by using an instrument. That would be that least count of that particular instrument. While measuring the length or distance, eye must be kept vertically above the reading point as shown in figure 1.4b. So this is the figure. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जो जिस पॉइंट की भी आप रीडिंग लेना चाह रहे हैं आपकी आई उसकी डायरेक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए. डोंट वॉच इट फ्रॉम हेयर और देयर. आपने उसको परपेंडिकुलरली देखना है टू रिमूव एनी एरर्स. द रीडिंग्स बिकम डाउटफुल इफ द आई इज पोजिशन आइदर लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट. सो फिगर 1.4 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डायग्राम्स हैं एंड in the first diagram, in the A diagram, the person is looking from the side, not vertically or perpendicularly. So that is the wrong position. While in B, it is the correct position of the eye to note the reading from a meter rule. The next instrument which we have is measuring tape. Similarly, जिस तरीके से हमारे पास मीटर रूल है, मीटर रूल में हमारे पास एक स्पेसिफिक एक फिक्स लेंथ हो जाती है कि वो 100 मीटर्स तक उसको कर सकता है फाइंड आउट. बट इन 100 सेंटीमीटर तक. बट इन मेजरिंग टेप थोड़ा सा इसमें लॉन्ग हो जाता है. मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ्स इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. फिगर 1.5 shows the measuring tapes used by blacksmiths and carpenters. A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal or plastic, generally 10 meter, 20 meter, 50 meter और 100 meter long. तो ये वेरी करता है. measuring tapes are marked in centimeter as well as in inches. तो इसमें इंचेस का ऑप्शन भी होता है एक साइड पे और एक साइड पे सेंटीमीटर्स का ऑप्शन भी होता है. यू वुड हैव सीन दिस इन योर होम्स एज वेल. तो दिस इज यूज फॉर द मेजरिंग पर्पसेस.
So today's topic, uh, we would end just at this point. बहुत easy था measuring instruments का एक थोड़ा सा general brief introduction हम लोगों ने किया आज. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वर्नियर कैलिपर्स को मैंने अभी डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा ये एक डिटेल टॉपिक है, अलग से इसको डिस्कस किया तो बेहतर होगा, अदरवाइज यू पीपल विल गेट कंफ्यूज इनटू इट. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस व्हेनेवर वी अपलोड. Also, if you have any queries, any sort of questions, any sort of doubts, you can easily ask me in the comment section. Till then, wait for our next video. Allah Hafiz.